Hello students, very good morning to all of you. Today we are going to discuss the plus 2 chemistry sample paper 04 जो 4 है sample paper वो आप डिस्कस करने जा रहे हैं. So this is class chemistry, plus 2 class chemistry. So total marks, that is a 70 marks and that is a time allowed of 3 hours. So एक information मैं देना चाहांगा बच्चे, अगर ज़रूर तुसी इन्हां सारे पेपर दे सोल्यूशन कवर करना चाहते हो तो सो मैं कुछ रिकमेंडेड करांगा लास्ट विच इस पेपर दे सोल्यूशन दे विच. सो नैक्सट आप स्टार्ट करते हैं फ्रॉम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. सो फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर आइडियल सोल्यूशन विच हैविंग द there is no change in volume and no change in delta H mixing, enthalpy change mixing. So it always rolls slow. Ideal solution which always rolls slow. This is also right statement. Delta H mixing is 0, delta V mixing is 0. So correct answer which is not correct, that is delta S mixing is 0. Entropy change in mixing is 0. That is not for the ideal solution. So next question है, the colligative property of dilute solution depend upon. So first है nature of solute, nature of solvent, nature of particles of solute and the molecular mass of a solute having highest boiling point. So colligative property, that is depend upon the number of solute particles, doesn't depend upon the nature they depend नहीं करती, that is the number of solute particles. So option C is the correct answer. नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल डिपेंड करते हैं. दीज आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी साढ़े सिलेबस के विच है. सो फर्स्ट दैट इज़ ए रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकंड दैट इज़ ए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड दैट इज़ ए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड फोर्थ वन दैट इज़ ए ऑस्मोटिक प्रेशर. ठीक है जी. नेक्स्ट देख रहे हैं, दैट इज़ ए नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट्स ऑफ मोलर कंडक्टिविटी आर. मोलर कंडक्टिविटी द यूनिट्स दैट इज़ K इंटू 1000 फॉर्मूला होंदा ਉਹਦਾ, ठीक है, ओवर M. सो ਇਹਦੇ यूनिट की होंगे सीमन सेंटीमीटर स्क्वेयर मोल इनवर्स. ठीक है, मोल इनवर्स. सो करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन डी इज सीमन सेंटीमीटर स्क्वेयर मोल इनवर्स. दैट इज द यूनिट्स ऑफ मोलर कंडक्टिविटी. ठीक है. नेक्स्ट है द मेटल यूज्ड इन द गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन. गैल्वेनाइजेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच द आयरन कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम द corrosion by इलैक्ट्रोप्लेटिंग विद द जिंक मैटल. सो जिंक के नाल जो इलैक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं आयरन, दैट इज़ मैटल कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम द corrosion, दैट इज़ कॉल्ड एज ए गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस. ठीक है. सो दिस इज रिपीटेड क्वेश्चन मैनी टाइम्स, मैनी एग्जाम्स. ठीक है. In the dry cell, which of the following is the electrolyte? In case of a dry cell, that is the main electrolyte used, that is a ammonium chloride. ठीक है. is the ammonium chloride and zinc chloride. Ammonium chloride is the electrolyte used in the dry cell. Next question, the reaction rate constant can be defined as the rate of reaction when each of a reactant concentration rate of reaction become equal to rate constant when the concentration of a reactant is unity. अगर वो 1 हो जाएगी तो rate of constant ਨੂੰ ਆਪਾਂ डिफाइंड कर सकते हैं. सो इट इज़ आंसर, दैट करेक्ट आंसर दैट इज़ ए बी ऑप्शन, दैट इज़ ए यूनिटी. ठीक है जी. सो नेक्स्ट चलते हैं. वट इफेक्ट डज द टेम्परेचर हैव ऑन द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. जिस तरह सानू सब नू पता है कि फर्स्ट हाफ लाइफ पीरियड जिहड़ा हैगा दैट इज़ रिटन इन दैट टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 ओवर के. सो ये कितने भी जो टैंपरेचर है वो गल नहीं हैगी है, ओनली रेट कॉन्सटेंट पर डिपेंड है हाफ लाइफ पीरियड. वट इज़ इफेक्ट ऑफ टैंपरेचर, वट डज इफेक्ट डज टैंपरेचर ऑन द हाफ लाइफ पीरियड, इट रिमेन्स द सेम. ठीक है, इस टैंपरेचर का कोई इफेक्ट नहीं है. नेक्स्ट है, व्हेन द टैंपरेचर राइजेज वट हैपन टू द पीक ऑफ द कर्व इन द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. सो आप सारिਆਂ पता है कि जो भी आप गल करते हैं तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जी इस तरह होंगी है. तो जेकर आप देखा जाए तो वो टैंपरेचर राइज, अगर टैंपरेचर राइज कर जाता तो वो होर ज़्यादा जाती तो फॉरवर्ड ही है, बट होर की शार्प तो बेंड हो जाती है. ठीक है. दैट इज़ ए शिफ्ट फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड हो जाती है.
ठीक है। सो सेकंड ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, बिकॉज एवरी 10 डिग्री राइज इन टैंपरेचर रेट ऑफ रिएक्शन बिकम डबल। ठीक है, आप जिस तरह कंडीशन ਨੂੰ फिल रीड करते हैं मैक्सिमम टाइम। नेक्स्ट है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल एफ डेंसिटी ऑफ सम लेक वाटर इज डेंसिटी ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ एंड 92 ग्राम ऑफ सोडियम आयंस पर वाटर कैलकुलेट द मोलैलिटी। मोलैलिटी ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ठीक है। ऑल स्टेटमेंट सारा कुछ गिवन है सानू, सो इतने आप ईजिली ये कैलकुलेट कर सकते हैं। नैक्सट आप शो करा। नैक्सट क्वेश्चन है द अगेन न्यूमेरिकल बेस्ड है, ठीक है जी। सो नैक्सट है ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन। विटामिन बी, इतने कुछ कन्फ्यूजन है, B12 होएगा। B12 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कोआर्डिनेशन कंपाउंड। B12 जोड़ा होंगे दैट इज़ अ साइनोकोबालामिन, दैट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कोआर्डिनेशन कंपाउंड। दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट है the ambient and ligand are those ligand which can ligate through only one atom। so condition ambient which can ligate more than one site ਹੁੰਦਾ है। so इत्थे through only one site लिखा हुआ है, so this is a false statement, ठीक है, क्योंकि ambient state ਦੇ ਵਿੱਚ ligand ਕਿਸੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ डोनेशन ਦੇ ਨਾਲ डोनर एटम बन सकता है। सो नैक्सट है निकल Cl4। इस क्वेश्चन पेपर निकल Cl4 होएगा। इत्थे हैज़ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। सो दिस इज ऑल्सो ए ट्रू स्टेटमेंट बिकॉज दिस हैज़ a tetrahedral geometry। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल CO4 दैट इज ए कार्बोनाइल जीरो फील्ड न्यूट्रल लिगेंड आ जाएगा साढ़े को, फिर x प्लस 0 इक्वल टू 0। सो साढ़े को x 0 आ जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट निकलती +2 है। दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स है। नेक्स्ट है चलेटिंग लिगेंड फॉर्म मोर स्टेबल कंप्लैक्स दैन मोनोडेंटेट, ऑल्सो ए ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेबिलिटी बढ़ जाती है जो जितनी ज़्यादा चलेशन होएगी। नेक्स्ट है इथेन 1,2-diamine इज ए न्यूट्रल डाइडेंटेट and chelating ligand, this is also a true statement, ठीक है, क्योंकि ये न्यूट्रल भी हैगा, डाइडेंटेट भी हैगा एंड चलेटिंग लिगेंड भी है, ठीक है जी। नेक्स्ट दैट इज ए पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन विच कैन बी ईजीली कंप्लीटेड। नेक्स्ट सैक्शन बी टाइप आ जाती है जिहदे विच न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन 1.8 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन and temperature given, kb is given, molar mass also given, we can easily solve। next again numerical type question है साढ़े कोल, ठीक है जी। उस तो बाद इन चैप्टर के क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरिंग क्वेश्चन है, नेक्स्ट 3 मार्क्स कैरिंग क्वेश्चन है, तो फिर नेक्स्ट है 5 मार्क्स क्वेश्चन। सो आप स्टार्ट करते हैं टर्न बाई टर्न। सो फर्स्ट क्वेश्चन साढ़े को जिस तरह है, the boiling point of benzene that is given, ठीक है, when 1.8 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डिसॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन। सो ये साढ़े को सब तो पहले एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करांगे जो कि टैंपरेचर चेंजेस के नाल साढ़े को आ रहा। सो 354.11 माइनस 353.23 अगर करांगे साढ़े को टैंपरेचर आ रहा। नेक्स्ट WV सानू वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट गिवन है, वेट ऑफ सॉल्वेंट ऑलरेडी गिवन है, kb वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। सो एज वी नो डेल्टा TB इक्वल टू kb इंटू एम एम दैट इज़ अ मोलैरिटी। मोलैरिटी का जो फॉर्मूला पुट करांगे साढ़े को वाला फॉर्मूला कंप्लीट दे विच हो जाएगा। सो ये MB की वैल्यू निकाल लवांगे आपां मोलर मास ऑफ सोल्यूट बाय पुटिंग द ऑल वैल्यूज, then solve it, we can get the answer 57.5 gram per mole। so this is the first numerical, so this is based upon the elevation in boiling point। similarly next question, that is a commercial available sample of sulfuric acid, 15% sulfuric acid है, and calculate the molarity, weight of solute given है, weight of solvent given है, gram moles of solute also calculated, ठीक है, 15/98। next by using the formula density equal mass per unit volume, we can calculate the volume, that is mass over density, put the value and we will get the answer 90.9 ml।
Then put the formula of molarity, that is the number of moles of solute dissolved in volume of solution, that is वॉल्यूम मल्टीपल बाई 1000. सो पुट करांगे वैल्यू सॉल्व करांगे साढ़े को आंसर आ जाएगा 1.68 मोलर. सो इसी दो न्यूमेरिकल्स. सो नेक्स्ट है अगेन सोल्यूशन चैप्टर द क्वेश्चन कि हेनरी लॉ कांस्टेंट एंड सिग्निफिकेंस की है. So as we know the Henry law constant, Henry law, it is defined as the partial pressure of a gas is directly proportional to the mole fraction of the gas. That can be written, and where when we remove the proportionality constant we will get the kh, that is called as a Henry's constant. Next, significance greater the value of kh, जिन्नी kh दी वैल्यू ज़्यादा होएगी lower is the solubility of a substance. जिन्नी kh दी वैल्यू ज़्यादा होया करेगी, kh ज़्यादा तो उन्नी solubility के अंदर substance दी घट होया करेगी. And its value depend upon the nature of gas, and it whole depend upon the nature of gas. As kh increases with rise in temperature, kh in temperature rise करेंगे तो kh भी increase करेगा. So solubility decrease with the rise in temperature. ठीक है, solubility decrease करेगी temperature rise करन दे नाल. Next question है साढ़े कोल. A first order reaction shows the time required for 99% completion of a first order reaction is twice the time required for 90%. साढ़े कोल दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन दे अकॉर्डिंग टाइम रिक्वायर्ड निकालांगे. 99% ਲਈ ਤੇ 90% ਲਈ ਤੇ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ, that is T 99% that become equal to twice the T 90% reaction. So start करते हैं from first order reaction. As we know first order reaction T is equal to 2.303 over K log A naught over A, and time required for 99% completion, that is a T 99% equal to 2.303 over K log 100 over 100 minus 99, that is a log नीचे 1 आ जाएगा 100 over 1. सो सॉल्व करांगे इसनों वैल्यू नो. सो वी विल गेट द आंसर. सो सिमिलरली इतने तक साढ़े को इधर सोल्यूशन आ गया. नेक्स्ट आप T 90% करांगे हम. T 90% अगेन यूजिंग द equation T is equal to 2.303 over K log initial concentration over final concentration. इतने 90% completion है, so T 90% become equal to 2.303 over K log 100 over 100 minus 90. so इन्हें solve करांगे साढ़े को लेवल आंसर आ जाएगा. so 1 and 2 equation तो ज़रा divide करांगे. so T 99% over T 90%, that become equal to twice value आ जाएगी. T 99% become equal to twice the T 90%. so इस तरह अपन solve करांगे. hence the time required for 99% completion of first order reaction, that become twice the time required for completion of a 90% reaction. so easily अपन कर पावांगे. so next है calculate the half life period of a first order reaction whose specific rate constant सानू given है. so T half निकाल लवांगे अपन, become equal to 0.693 over K ਦੀ वैल्यू पुट करांगे तो साढ़े को आंसर आ जाएगा 3.47 मल्टीपल 10⁻³ सेकेंड इनवर्स. ठीक है. सो नेक्स्ट है वाइड transition metal form alloy with transition metal easily. so transition metal they can easily form alloy because the reason is the tendency of a transition metal to form alloy can be explained on the basis of their size. the atomic size of transition metals are very similar, and hence the crystal lattice of atom of one atom can readily replace with the atom of another transition metal. The result in the formation of alloys, for example steel, iron alloy with the carbon. so this is the answer. they can easily form the alloys जिस तरह एग्जांपल ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन न्यूमेरिकल है जिहदे विच सानू मास ऑफ सल्यूट गिवन है, मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है 25 ग्राम, and change in elevation boiling point that can also be calculated by given temperatures conditions. 56.86 minus 56.38, we will get 0.48 degree centigrade. next kb value is also given. so again using the relation kb delta t be equal to kb into m. ठीक है, m is the molarity, put the value of molarity terms and we can easily calculate mb value from this relationship. so put the value kb, that is 1.72, mb, that is 1.80, 1000 divided by delta tv 0.48 multiple mass of solvent 25.
So it will give the answer, that is a 258 gram per mole is the correct answer for molar mass of solute. Next again numerical, that is also on the elevation boiling point. So which elevation boiling point can be calculated from the given temperature, that is a TB 100 TB note 96.63. so इत्थों ਆਪਾਂ डेल्टा TB निकालवांगे. mass of solvent given है सानू, molar mass of solvent already given है, molar mass of solute that is a M2 that is 342. so mass of sucrose ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ. so as we know again relationship that is delta TB equal to KB into M. ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੋਲੈਲਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਤੋ M ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ MB ਉਹਨੂੰ M2 then from formula W2 that is ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ. ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ M2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, W1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਡੈਲਟਾ TB ਸਾਨੂੰ ਨਿਕਾਲ ਲਿਆ ਆਪਾਂ 1000 KB ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ. ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਗੈਟ ਦਾ ਆਂਸਰ 1108.2 ਗ੍ਰਾਮ. ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਸ ਆ ਜਾਏਗਾ. ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫਰੀਜ਼es at a lower temperature than water but boil at a higher temperature than water. why? ਕੋਈ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਹੈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਫਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਐਟ ਲੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਕਾਫੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਲੋ 'ਤੇ ਫਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਬਟ ਦੈਨ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਬਟ ਬੋਇਲ ਕਰਾਂਗੇ at a higher temperature than water but boil high. The reason is sodium chloride that is a non-volatile solute. The freezing point of a liquid decreases. freezing point decrease करता पे कारण किया on addition of a non-volatile solute. So solution of NaCl freezes at temperature lower than freezing point because NaCl is a non-volatile solute. But on the other hand there is a elevation boiling point on addition of non-volatile solute. So boiling point of NaCl is more than that of water. ठीक है, क्योंकि ये मेन रीज़न दैट इज़ ए NaCl that is a non-volatile solute. Due to that condition are opposed. Next है the conductivity of a 0.2 molar solution of KCl at 298 Kelvin. साढ़े कोल K value given है, conductivity भी given है, molarity concentration भी सानू given है. So by using the molar conductivity formula that is equal to K into 1000 over M. so put करांगे साढ़े कोल मोलर कंडक्टिविटी निकल जाएगी. ठीक है, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी. ठीक है, सो दिस इज द रीजन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है साढ़े कोल, why do transition metal exhibit a higher enthalpy of atomization? Because the in case of one transition metal, another transition metal, both having the unpaired electron, both have a tendency to sharing the electron. When shared, that will form a bond between them. As the bond formed by the valence electron that become more stronger, they have all tendency. So if the metal have more and more number of valence electron, they have more and more number of tendency to form the bond by sharing the electron, and hence bond become stronger and the force of attraction become stronger binding between the metals. Hence they need large enthalpy of atomization to break this bond. ठीक है, so because the large number of molecule unpaired electron of their atoms, they have a stronger interatomic interaction and hence stronger bonding between the atoms resulting in higher enthalpy of atomization. ਸੋ ਨੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਮੈਟਲ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ. ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਂਡ ਫੋਰਮ ए ਬੌਂਡ. ਅਗਰ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸੋ ਉਸ ਬੌਂਡ ਸਟਰੋਂਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਮੈਟਲ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਤੋਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੌਂਡ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ. ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੌਂਡ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਨਾ ਮੈਟਲ ਬੌਂਡ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. ਜਿੰਨਾ ਬੌਂਡ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ. ਸੋ ਉਸਦੇ ਐਟਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਥੈਲਪੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਬਿਕਮ ਲਾਰਜ ਅਮਾਊਂਟ ਐਂਡ ਹੈਂਸ ਇੰਥੈਲਪੀ ਆਫ ਐਟੋਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਿਕਮ ਹਾਈ. ठीक है जी, so this is the question. Next, the difference between the double salt and coordination compound. In case of a double salt that exists in the solid state and associate in the liquid state. ठीक है जी, and coordination compound that exists in the solid as well as in a liquid state. ठीक है,
ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਦੇ ਲੂਜ਼ देयर ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਇਨ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਡਬਲ ਸਾਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ। ਐਂਡ ਦ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਡੂ ਨੋਟ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਲੂਜ਼ ਇਟਸ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਲੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। Next, the properties of double salt are essential the same as that of a constituent compound. So coordination compound, the properties of a coordination compound are different from the constituent. And the double salt, that is a double salt metal except their normal valency exists करते हैं, and a coordination compound that is surrounded by number of oppositely charged ions, ठीक है जी। इसी साढ़ा डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है साढ़े को what are inner and outer orbital complexes। so again बहुत ही complex question है। so in case of inner orbital complex, the complex having involving n-1 d orbital, that is the inner d orbital in the hybridization, and all cases of d2sp3 hybridization are called inner orbital complex. In the formation of inner orbital complex, the electron of the metal are forced to pair up, and hence the complex will be either diamagnetic or will have lesser number of unpaired electron. So such complex is called as a low spin complex, ठीक है। so inner complex है जिस विच n-1 d orbital यूज करते हैं, and they d2sp3 hybridization form करते हैं, that is called inner orbital complex। so inner complex ਦੇ ਵਿੱਚ metal are forced to pair, metal forcefully pair हो जाते हैं, so called as a diamagnetic or have a lesser number of unpaired electron। example साढ़े को FeCN6 4 negative, FeCN6 3 negative। so next है साढ़े को outer orbital complex, the complex having the nd orbital or all these cases sp3d2 outer side are a d orbital hybridization, that is called as a outer orbital complex। these complex has large number of unpaired electron and known as the high spin complex कह देंगे अपन, ठीक है। example CuF6 3 negative, FeCu Fe water 6 3 positive, ठीक है। so next है साढ़े को again difference between fibrous and globular protein। so in case of globular protein there is a cross linking in the condensation, ठीक है, cross linking कह देने ਆਪਾਂ condensation ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, and this is a linear condensation कह देने fibrous ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है। these are soluble in water or solution of acid base salt ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ soluble ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, and fibrous that is insoluble in the common solvent but soluble in strong acid, ठीक है। globular protein these are stabilized by the internal hydrogen bond interaction, and fibrous there is a formation of extensive hydrogen bonding between the neighboring chain। and globular protein, for example albumin in egg and all enzyme hormones, and fibrous ਦੇ ਵਿੱਚ myosin in muscle, keratin in hair and fibrin in the silk, ठीक है। so this is the difference। next again difference same chapter biomolecule, what is the difference between essential and non-essential amino acid। so essential and non-essential amino acid amino acid which cannot be synthesized in the body and must therefore obtain through a diet are known as the essential amino acid, and the amino acid which can be synthesized in the body are known as non-essential amino acid। essential amino acid the example lysine, valine, leucine, ठीक है। LVL कह सकते हैं ਆਪਾਂ लाइसिन, वैलिन, लूसिन, ठीक है। एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड दैट इज ए ग्लाइसिन, एलेनिन एंड प्रोलिन, ठीक है, इज ए एग्जांपल ऑफ नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। नेक्स्ट साढ़े को न्यूमेरिकल है अगेन एक्टिवेशन एनर्जी का। एज वी नो द फार्मूला ऑफ log K2 over K1 equal to EA over 2.303 R T2 minus T1 over T1 T2। सो सानू K2 over K1 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ को क्वाड्रपल रेट कॉन्स्टेंट है, ठीक है, 4 टाइम्स हो जाएगा। टेंपरेचर T1 गिवन है 293 कैलविन, T2 भी गिवन है 313 कैलविन। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 आ जाएगा, log 4 equal to EA over 2.303 over 8.314 हाईएस्ट टेंपरेचर माइनस लोअर टेंपरेचर, ठीक है, डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई टेंपरेचर। सो इतों आप सॉल्व करके ई ए एक्टिवेशन एनर्जी जो निकालेंगे दैट विल बिकम इक्वल टू 52.86 किलो जॉल पर मोल साढ़े को वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी बेस्ड न्यूमेरिकल। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल साढ़े को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। so as we know T is equal to 2.303 over K log initial concentration over final concentration,
as in the question is given as a 30% completion in 40 minutes at so k साढ़े को आ जाएगा 2.303 over 40 minutes temperature full करांगे एंड 100 over 30% माइनस करांगे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ 70 ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ k ਵੈਲਿਊ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 8.918 10 ਦੀ ਪਾਵਰ -3 ਮਿੰਟ ਇਨਵਰਸ so as we know we have to calculate the t half life period and formula of t half life become equal to t half equal to 0.693 over k सो इस पुट करांगे वैल्यू की रेट कॉन्स्टेंट दी सोल्व करांगे सो अप्रोक्सीमेटली 77.7 मिनट साढ़े को आंसर आ जाएगा सो नैक्सट है साढ़े को न्यूमेरिकल दैट इज एन एनएस वेस्ट इक्वेशन सो एट एनोड दैट इज ऑक्सीजन ऑफ सेलेक्शन लिखांगे अपना एंड एट कैथोड रिडक्शन ऑफ सेलेक्शन लिखांगे then overall selection and after that we have to write the Nernst equation so Nernst equation लिखांगे E cell become equal to E naught cell minus 0.059 over n log of final concentration over initial concentration तो जिस तरह आप फिल करांगे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ E cell ਸਾਡੇ को इस तरह सोल्व करांगे ਸਾਡੇ को ਆਹ ਵਾਲੀ वैल्यू आ जाएगी तो जो ਇਹਨਾਂ ਦੀ वैल्यू पुट करांगे ਸਾਡੇ को log ਨੂੰ सोल्व करांगे तो ਸਾਡੇ को लास्ट ਵਿੱਚ आंसर आ जाएगा 0.25 वोल्ट ठीक है नेक्स्ट साढ़े को इसी नर्नस इक्वेशन नैक्सट है साढ़े को पोलर शला वेस्ट इलैक्ट्रोकैमिकल चैप्टर का क्वेश्चन है सो ये की है साढ़े को मोलर कनेक्टिविटी Na सोडियम आयोडाइड की वैल्यू सानू गिवन है सोडियम एसीटेट की वैल्यू गिवन है मैग्नीशियम एसीटेट की वैल्यू गिवन है सो इस तो आप कैलकुलेट करांगे Mg(I2) सो पहली तो तीसरी क्वेश्चन तो अगर देखा जाए तो उन्होंने सम करके तो साढ़े को Mg(I2) बनेगा so Mg(I2) by taking the third equation plus 2 times of first equation minus करांगे अपन second equation तो solve करांगे सारा साढ़े को आंसर आ जाएगा that is a 30.66 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स सो नेक्स्ट है साढ़े को कैलकुलेट द गिव्स एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन सेल साढ़े को सेल रिप्रेजेंटेशन गिवन है जिंक तो जिंक टू पॉजिटिव कॉपर टू पॉजिटिव टू कॉपर एंड रिडक्शन पोटेंशियल आर गिवन एफ दैट इज गिवन कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क डन कैलकुलेट करना आप दिस इज ऑल्सो कोल्ड एज ए डैनियल सेल ठीक है सो एट एनोड ऑक्सीजन ऑफ सिलेक्शन एट कैथोड दैट इज रिडक्शन ऑफ सिलेक्शन देन ओवरऑल सिलेक्शन आप लिखांगे सो डेल्टा जी नोट बिकम इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट सेल सो ये वैल्यू सारी पुट करांगे ई नोट आप निकाल ली दैट इज कैथोड माइनस एनोड ठीक है जी सो इन्हें सॉल्व करांगे साढ़े को आंसर आ जाए -212.3 किलोजूल पर मोल नेक्स्ट आप देखिए अगेन नर्नस इक्वेशन बेस्ड न्यूमेरिकल कैलकुलेट सेल रिप्रेजेंटेशन गिवन है अगेन उसी स्टैप के अकॉर्डिंग एट एनोड ऑक्सीजन ऑफ सिलेक्शन लिखांगे एट कैथोड रिडक्शन ऑफ सिलेक्शन लिखांगे दैन ओवरऑल सिलेक्शन लिखांगे सो ये नर्नस इक्वेशन लिखांगे फिर E cell become equal to E naught cell minus 0.059 over n log concentration of product over reactant लिखांगे तो सो ये E naught cell कैथोड माइनस एनोड करके कैलकुलेट करके लिखांगे सो बाकी सारी वैल्यू पुट करांगे लॉग कैलकुलेट करांगे साढ़े को आंसर आ जाएगा 0.27 वोल्ट ठीक है जी सो दिस इज द मैथड नैक्सट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता 5 मार्क्स के प्रैपरेशन ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट ठीक है सो दिस इज कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द MnO2 with KOH and oxidation step with heating that will form a potassium manganate ठीक है with water and potassium manganate when treated with the HCl solution that will form a potassium permanganate KMnO4 the preparation with an MnO2 water and KCl so KMnO4 this is the best preparation method ठीक है next है transition metal and their compound are act as good catalyst so many of transition metal and their compound that is found to act as a catalyst because of the presence of incomplete d subshell they can form unstable intermediate product of with the reactant for example finely divided nickel platinum palladium are used as catalyst in the hydrogenation iron and molybdenum are used as catalyst in the manufacture of ammonia from nitrogen and hydrogen gases in the Haber process so this is the example so next question साढ़े को हैगा
डिफरेंस बिटवीन द लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड मैक्सिमम टाइम रिपीट होया सो ये भी डिस्कस करांगे सो फर्स्ट स्टेप है ऑक्सीडेशन लैंथेनाइड मेनली फॉर्म +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड सम एक्सपेक्टेड some show +2 and +4 oxidation state and in actinide that will show +3 oxidation state and higher oxidation states such as +4 5 6 7 binding energy of 4f are higher and actinide that is a binding energy 5f are lower. Next shielding effect 4f electron have greater shielding effect and 4f electron have poor shielding effect. This is the difference. Next question, the metal exhibit that is the metal have tendency to show variable oxidation states. The variable oxidation state of transition metal are due to also available of n-1d and ns electron and they have tendency to form bond as the energy of an ultimate d orbital and ultimate s orbital are nearly same. So sum total of ns and n paired n-1d electron determine the highest oxidation state by the transition complexes ਹੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ they will show the large oxidation state. Next structure of a Cr2O7, this is the structure Cr oxygen so ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 oxygen double bonded है 2 that is a show 2 negative charge that is a single bonding Cr2O7. Next why transition metal show colored compound. The color of transition metal compound may be attributed due to the presence of incomplete n-1d subshell. In case of compound the transition metal the energy of 5d orbitals in the same subshell do not remain equal under the influence of approaching the ions when ligand are approaching the central line d orbital that is split into two energy level further वो split कर जाते हैं. So अगर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ they again ligand are approaching they will gain the energy and the electron will move to the high energy state then as the high energy state become unstable then move back to the ground energy state. So the energy released from that process will fall into the visible region and that will show color. So this whole process is also called as a dd transition. So d orbital to transition करते पे low energy to high energy so can be permitted from one energy to another shell. This is also called as a dd transition ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ हम लो ग्राउंड एनर्जी स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈਗਾ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ એનર્ਜੀ ਗੇਨ ਕਰਕੇ ਹਾਈ એનર્ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਈ એનર્ਜੀ ऑर्बिटल दैट इज़ अनस्टेबल है वापस आएगा सो शो की करता पे डी ट्रांजिशन शो करता पे सो वापस आएगा एनर्जी फॉल करेगी विजिबल रीजन दैट विल शो कलर शो करेगा ठीक है. नेक्स्ट है विच इज़ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट क्रोमियम 2 पॉजिटिव सो अपन पता क्रोमियम 2 पॉजिटिव दैट इज़ क्रोमियम दी ऑक्सीडेशन स्टेट देखा जाए 3d4 है अगर इलैक्ट्रॉन लॉस कर जाता दैट विल फॉर्म है 3d4 3 बन जाता ऑक्सीडाइज टू Cr3 पॉजिटिव इन रिएक्शन क्रोमियम 2 पॉजिटिव एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करता है सो क्योंकि ऑक्सीडाइज हो गया. Similarly reaction of Fe2 positive ion that is act as a oxidizing agent वो Fe2 positive ion D6 है अगर वो D6 that will changes into the D5 ठीक है so D5 ਦੇ ਵਿੱਚ easily change कर जाएगा so D3 is more stable as compared to D5 so this is D3 T2G is a half filled हो जाता stability show कर जाता. Next last question the D1 configuration is very unstable in the transition metal ions. So D1 configuration the configuration of D1 configuration have tendency to lose the only one electron to acquire the nearest highest stable noble gas configuration hence D1 configuration is very unstable क्योंकि D1 configuration D1 एक इलेक्ट्रॉन ਹੁੰਦਾ है तो D orbital ਦੀ tendency है कि ਇੱਕ ਨੂੰ lose कर देवे तो gain कर ले highest stable noble gas configuration so this is a unstable. सो डियर स्टूडेंट्स लास्ट ਵਿੱਚ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਈਵਨ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੋਲਵ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚਾਹੀਦੇ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਬੁੱਕ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਬੋਰਡ ਪੇਪਰਸ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ਰਮਾ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਫੀਚਰਸ ਸਭ ਕੁਝ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਅਗਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਮਾਜ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਐਂਡ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਸਪੈਸੀਮਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਵੀ ਰਿਲੇਟਡ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਵਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ
So thank you and all the best to all the students, and hope that all of you will get good marks. So all the best. Thank you.